तो ऐसा नहीं है कि one film is better than the other. It's just about a jury selecting one film, and unfortunately, only one film can represent each country. If anyone wins even one award or one nomination in any other category, including ours, I think it's a win for India. So, all the best to everyone. Most cinemas and most distributors were picking up Hindi films and giving them prime time viewing, which is what the South has had, extremely well for many years now, because the Tamil audience or the Telugu audience has been very loyal for Indian films to cross over to the West. लेकिन हमने अपने खुद के country में हम इतना crossover, one state has not crossed over to the other state so far. सोची को मेरी फिल्म खरीद रहे तो मैं ऑस्कर से बड़ा और खुश हुआ. So the North audiences got a taste of South cinema a lot on television. The stars got known, that grammar of storytelling got known. 10 साल ही हुए हैं जो फिल्म डिसअपियर हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सालों गुजर गए. एंड यू कैन इमेजिन कि मैं थोड़ा यंग प्रोड्यूसर हूँ, तो ऐसा नलिन बोलते हैं, लेकिन I think in everyone, you don't have to be from the film industry to fall in love with it. I mean, anyone, anywhere will remember those moments of wonder when something touched you and made you want to be doing it all your life. तो हेलो, आप सभी का बहुत ही खास मौका है, क्योंकि 95th ऑस्कर के लिए जो फिल्म चुनी गई है इंडिया की तरफ से, ऑफिशियल जो एंट्री है, उसके सभी जो खास लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं. मेरे साथ हैं पैन नलीन, मेरे साथ हैं धीर मोमाया और सिद्धार्थ रॉय कपूर. पैन नलीन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं. धीर भी इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं, और सिद्धार्थ जैसे कि हमेशा से वो कई सारी कमाल की फिल्मों को सपोर्ट करते आए हैं, वो भी एक प्रोड्यूसर इनमें से हैं. सबसे पहले आप सभी का स्वागत है. फिल्म जो है इस बार की सरप्राइज एंट्री है एक तरीके से, और जिस अंदाज में फिल्म को, इंडियन मूवी हेरिटेज को, इंडियन कल्चर को, और खासकर जिस अंदाज में आपने गुजरात को दिखाया नलिन, वो बहुत ही कमाल है. पहले तो आप इस समय क्या फील करें, क्योंकि हर तरफ इस फिल्म के बारे में बज़ है, और खासकर अभी आगे भी जब बात करेंगे तो आप लोग की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी कमाल हो गई कि जो थर्सडे का लास्ट शो होने वाला है 95th ऑस्कर, क्योंकि नंबर न्यूमेरिकल 95th से इम्पोर्टेंट है, तो वो जो शो है वो 95 रुपीज में लोगों को देखने का मौका भी मिलेगा. सही बात है. ये 95th, you want to comment? 95. Sid will tell more about 95th Academy. As you said, I think you sort of set it up very correctly by saying it's the 95th Academy Awards, and we want as many people to watch the film as possible. So we thought, let's have the tickets available at 95 rupees the day before the release. So it all sort of tied in well together in terms of what we wanted from our audiences, for as many people to watch it as possible, and therefore the number 95 assumed that much significance. Kudos to you and your team, sir. हर वक्त वो नए इंटरेस्टिंग आइडियाज लेके आते हैं फिल्म प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए, और खासकर जब ऐसी फिल्म हो, जो कि मैं नलिन से मेरी बात हो रही थी, बड़ा कनेक्ट ऐसा है कि इंडिया में छोटे शहरों के खासकर जो लोग हैं, मैं एक स्मॉल विलेज से मैं कहूँ, वहां से आता हूँ, और मेरे लिए वो पर्सनल जर्नी थी. जब मैं फिल्म देख रहा था, वो कनेक्ट बन रहा था, क्योंकि मैं खुद स्कूल में बताना चाहूंगा कि बंक करके जाता था, और मैंने वहां के छोटे से जो एक सिनेमा थिएटर था, वहां का जो प्रोजेक्टर था, जो बंदा दिखता था, उससे मैंने दोस्ती कर ली, और वो पूरी कहानी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कहानी चल रही है, विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं पूरी तरीके से. तो ऐसी फिल्म को सपोर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. नलिन, आपकी खुद की कहानी है, आप अब इसको जब इस लेवल पे जा रही है, एकेडमी अवार्ड्स में इंडिया की एंट्री है, वो इस इमोशन को किस तरीके से बयां करोगे आप? इमोशन तो मैं यही बताना चाहूंगा कि अभी चल ही रहा है बहुत दिनों से. आई एम overjoyed, thrilled. Especially, I'm really happy with the crew and cast, who have worked with me. And as you said rightly, it's such a story. It can be story of millions and billions of people, because we all have our own experience of either escaping school or lying to our family and going to see movies, or lying to our, because just last night also people are telling me that, oh, मैं भी झूठ बोल के picture देखने जाता था. So this is incredibly quite interesting, and not only to India, even it was a similar story in many countries, where as a growing up, there was a divide between the family's belief system and what movies represented, So it was same in France or Italy,
where kids were discouraged to, or if they go, there should be a parental guidance, So I think in a way, this film is, going there for as India's entry to Oscar has given us this story a wider opening, and I'm sure it will speak to everyone in many different levels, and इसमें अच्छी बात यही है कि ये फिल्म जो भी देखता है उनको खुद की कहानी याद आ जाती है. I think that is a very big connect. और एक खूबसूरत बात ये भी है नलिन की फिल्म में जिस तरीके से आपने सोशियो इकोनॉमिकल डिवाइड, क्लास के डिवाइड को दिखाया है, फिर गुजरात को, वेस्टर्न गुजरात को, वहाँ गिर के जंगलों को, और मूवी मेकिंग और वो पूरा एक प्रोसेस को इतने खूबसूरती से दिखाया है जो शायद आज के मिलेनियल्स और आज के बच्चों को वो जो पहले वाली जो चीजें थी, क्योंकि डिजिटल पूरी सिस्टम डिजिटल हो गया है, तो वो चीजें जो शायद वो नहीं देख पा रहे होंगे और अब वो आपकी फिल्म के थ्रू उस जर्नी को देख रहे होंगे. हाँ, ये अच्छी बात है क्योंकि वैसे देखा जाए तो सिर्फ 10 साल ही हुए हैं जो फिल्म डिसअपियर हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सालों गुजर गए. तो आई थिंक ये अच्छा है कि ये जरूरी है कि बच्चे भी ये फिल्म को देखें, क्योंकि जितना भी हमारे यहाँ लाइक द होल कल्चर इज ड्रिवन बाय लेट्स से सर्टेन पॉपुलर स्टार, सो दे आल्सो हैव देयर ओन स्पेस, बट in a way this movie will help children dream big, so I think yes, बड़े सपने देखने वाली फिल्म में भी जरूरी है कि बच्चे देखें और उससे I think they'll get inspired to keep doing what they want to do, rather than go into a one mindset which many times educational institutes sort of impose on the kids. So I think it's good for them to know what is the history of cinema in a very indirect way while they get entertained before the digital era arrives. धीर एंड सिद्धार्थ सर, मुझे ये बताइए पहली बार जब आपने फिल्म देखी या इसके साथ, इस फिल्म के साथ आप किस तरीके से जुड़े, उस जर्नी को अगर थोड़ा सा बताना चाहें. धीर? तो मैंने जब एंग्री इंडियन गॉडेसेस देखी थी, जो नलिन की प्रीवियस फिल्म है, तो तब मुझे पता लगा कि ऐसे फिल्म मेकर के साथ मुझे काम करना ही है कैसे भी करके. एंड यू कैन इमेजिन कि मैं थोड़ा यंग प्रोड्यूसर हूँ, तो नलिन ऐसा नलिन बोलते हैं, लेकिन वाकई आप यंग प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ. आप ऐसे प्रोड्यूसर की जरूरत है आज की इंडस्ट्री को. हम ये कहूँगा कि मुझसे बहुत यंग है तो तो मैं actually that's the reason I was saying that for me I knew that with this film it wasn't even about the film, it was about the filmmaker. I always wanted to make a film with Nalin, of Nalin's. It's been an incredible learning curve, even working with Siddharth and seeing how he functions and how he runs his company, and like you said rightly, how they market the film. It's been an incredible learning journey and learning curve for me, right? And I didn't go to film school, I studied biotechnology. So for me to go from, from studying protein synthesis to telling stories was quite a long journey. And I feel like anyone who's gone through that journey, or anyone who decides to do films, when they read the script or when they hear Nalin's backstory, not even the script, when you hear Nalin's story of how he grew up and how he was always a storyteller, and how, he used to play with matchboxes and collect matchboxes and do storyboarding, or how he would still steal film reels and then the police would show up to reprimand him. I feel like you said rightly, we all project ourselves into that story. हमें जो भी देखता है, जो भी ये फिल्म देखेगा, उनको अपना स्टोरी याद आ जाएगा. Either you'll remember your first film, or you'll remember sometime that you went with your girlfriend to the cinema. Something will come to your mind about that shared experience of going and immersing yourself in the cinematic experience. So I feel like for me, as soon as I met Nalin, I realized that I wanted to tell this story specifically. That time he hadn't even written the script. So then many years later, when he did call me and he said, I want to make a film and will you produce it with me? I said, you don't need to tell me the story. I'm on board. I'm with you. So that's how I got on. सिद्धार्थ सर, मतलब आप तो हर तरह की फिल्म को, कॉमर्शियल हो या ऐसी कमाल की फिल्मों, सपोर्ट करने के लिए हमेशा आगे रहते हो. क्या कुछ खास दिखा और उस जर्नी के बारे में बताओ. So, when Dheer got in touch with us and said he'd like to show us this
small Gujarati film that he's produced, we were very excited to watch it because we'd, been sort of interacting with him for a long time, and we wanted to work with him on something together. And when he showed us his film, we fell in love with it completely. The film had already been shot, and the way that Nalin had managed to capture the beauty of this little boy's experience in this small village, falling in love with his, what you presume is going to be his lifelong passion. It evokes so many memories of your own childhood. And I think in everyone, you don't have to be from the film industry to fall in love with it. I mean, anyone, anywhere will remember those moments of wonder when something touched you and made you want to be doing it all your life, and, to come and have these big dreams, like Nalin said, and to be able to take them out into the world to dream impossible dreams. And, the beauty with which Dheer had supported Nalin in that vision, the way he produced the film with so much love, with so much care, with so much attention to detail, and the way that he had managed to, bring out the vision that Nalin had and to help him and support him in that vision. We decided that we wanted to be a part of that, as soon as they showed us the movie. And that's where the journey began for us. And I'm so glad that we're at this point now where we're being able to bring it to the whole country and to, be able to bring it to the audience that it was meant for in the first place. And again, we're honored and privileged to be able to represent our country at the Academy Awards. So fingers crossed. और नलिन, मतलब जहाँ जहाँ प्रीमियर हो रही है, कई जगह पे प्रीमियर के पहले ही आपको पार्टनर्स मिल गए हैं दूसरे देशों में, और इस तरीके का जब रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। वो जो मेहनत है आपको लग रही है वो पूरी तरीके से वो साकार होता जा रहा है, आपके वो जो सपना था। हाँ, मैं तो होता जा रहा है पक्का, क्योंकि जैसे एक छोटा सा आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि जब मैं बहुत बड़ा फिल्म बापू, और हम सब ने देखी होगी हिंदुस्तान में, हम अकीरा कुरोसावा की फिल्म देखते थे, योजिम्बो, सेवन समुराई, फिर उसके बाद ओजू की फिल्म देखेंगे। तो वो फिल्म शुरू होती है ना, उसके पहले एक लोगो आता है, जैसे अभी आता है रॉय कपूर फिल्म, इसी तरह से वो सोचिकू आता था, लोगो सोचिकू। और जैसे ही लोगो आता था ना, मेरे स्टमक में बटरफ्लाई गुदगुदी, अरे चलो अभी फिल्म शुरू होने वाली है, तो लोगो इतने बार मैं देख चुका हूँ, क्योंकि जितने भी जापानीज मास्टर है, ओजू, मिज़ोगुची, यामादा, अभी मॉडर्न फिल्म मेकर ताकेशी माइक, कुरोसावा, सबके पहले वो आ रहा है अलग अलग फॉर्म में, सोचिकू। जो फिर एक बार फोन आया हमारे सेल्स एजेंट जो ऑरेंज स्टूडियो है कि सोचिकू मेरी फिल्म खरीद रहे हैं, तो मैं ऑस्कर से बड़ा और खुश हुआ कि पहले सवाल जब मेरे फिल्म के आगे उनका लोगो लगेगा कि नहीं। तो देखते हाँ पक्का लगेगा, तो मेरे जल्दी लोगो भेजो मुझे। So I couldn't believe that the same studio which has stood for 106 years of Japanese cinema and have done every masterpieces I've loved, and they are telling me, we just realized we have not bought any Indian movie. We are just buying a first time an Indian movie. So I think that was really a kind of spoke for many other incidents like that, whether it's Samuel Goldwyn buying for the US or distributor getting excited. Festivals and award is something which has happened, with when you do such cinema, because very often the kind of films I do, I need festivals to sell it. For me, it's not the primary aim to go and win award. It's primary aim to how to find distributors, and till recently, I think only with last film show, if you look at Google, you will see I never went to collect any award, even though we won, I think, 30 plus award, including Angry Indian Goddesses, Valley of Flowers, Samsara had about 25. I was very shy. I said, not award, just find me a distributor, So I think that really changed for me, that, studios like Medusa, Samuel Goldwyn Films, Orange Studios, Orange Studio has been associated with great cinema of Terrence Malick, which is very risky business, as we know, because Terrence Malick would not appear, wouldn't give interviews, wouldn't do any marketing. So I think some of these people who are conscious about quality entertainment, they are not art house producers or distributors. They know that they want to bring best of the cinema to their audience in their own country. So when they have come and joined our journey, that's what I
feel really excited about. And of course, now we are given even a bigger responsibility, and whole of India will discover the film on 13th and 14th October. And for us, it's just a beginning. We have a long way to go, and we as a team are going to go and do best we can to show the film to maximum Academy members. Siddharth sir, the film has surpassed like commercial and critically acclaimed films like RRR and the Kashmir Files. इस कैटेगरी में आने के बाद ऑफिशियल एंट्री के तौर पे जाने पे इस फीलिंग को कैसे आप देखते हो कि मतलब इतनी बड़ी फिल्म है जिसको पैसे भी जो कमा रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे और जिसको क्रिटिकली भी लोग पसंद कर रहे हैं? बात ये है कि आई मीन लाइक हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा ऑनर है. It's a privilege for us to be able to represent our country. A jury was set up to select the films and they selected us, so we're thankful to the jury. और ये बात है कि सिनेमा में कुछ ब्लैक और वाइट नहीं, it's not black or white, it's not binary. तो ऐसा नहीं है कि one film is better than the other. It's just about a jury selecting one film, and unfortunately only one film can represent each country. And these are debates that happen not just in our country every year, but around the world. So we're just very honored that we are the ones who've been selected. And if there are other films competing in other categories from India, I think we wish them luck, because I mean, if anyone wins even one award or one nomination in any other category, including ours, I think it's a win for India. So, all the best to everyone. Anil, Gujarati films, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट द गुड रोड ऑस्कर के लिए एंट्री के लिए गई थी और उसके बाद अब इस फिल्म को मिला है. आपसे भी सिद्धार्थ सर मैं ये पूछना चाहूंगा इवन धीर कि साउथ इंडियन फिल्म्स ने जिस तरीके से बाउंड्रीज तोड़ी है, पैन इंडिया जो एक टर्म ट्रेंड कर रहा है आजकल हर तरफ से, गुजराती फिल्म्स को लेकर उस तरीके से वो मेकर्स क्या शायद उस तरीके की फिल्म नहीं बना पा रहे हैं, या फिर जनता में वो फिल्म मार्केट वैसी नहीं हो पाती है, इसलिए आपकी फिल्म जब अब चलो शो जा रही है शायद उसके बाद से शायद गुजराती फिल्म्स को लेके थोड़ा जनता में और प्यार दिखेगा? So I think, in Gujarat, right, the way the film market has worked there is that typically Gujaratis have, Hindi films have been distributed in Gujarat, right? So the Gujarati cinema is now just about sprouting up, where Gujaratis are going to the cinema to watch Gujarati language films. But because it was part of the West and North distribution sort of centers for Hindi films, those were the films that were marketed most there. So most cinemas and most distributors were picking up Hindi films and giving them prime time viewing. But there has been a change in the last about 5 or 10 years, where even commercial Gujarati films, now Gujarati films are coming with genres. There's a sci-fi Gujarati film, there's an action Gujarati film. So I think it's a matter of time before the industry sort of mushrooms a little bit and opens up, where then budgets and stars and everything will be able to, you'll be able to justify a larger budget. Which is what the South has had, extremely well for many years now, because the Tamil audience or the Telugu audience has been very loyal to Tamil and Telugu language films. Same with Malayalam or with Kannada. So I feel like it's just a matter of time. Similarly with Punjabi films or similarly with Assamese films, there are so many different languages with so many different cultures in India that there should be that many different industries, and there should be, it's all actually one industry. It should come under Indian cinema, but different languages, and we've all seen, and I think, Sid can speak better on this, but there has been a huge renaissance of regional language films, especially post the pandemic and post streaming, because people's consumption patterns have changed. Now they are open to watching films with subtitles or watching a dubbed movie. And in fact, people are more interested in seeing what the other part of the country is, the culture that the other part of the country has. So the fact that, a film like Pushpa or KGF has been watched by, people all over the North is just a testament of the fact that, we are open and we're looking to, experience our brothers and sisters' stories from the South, from the North, from the East and from the West. So that sort of crossover is now beginning to happen in a much larger way. सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुजराती फिल्म भी अब KGF या RRR की तरह पैन इंडिया एक मार्क क्रिएट कर पाएंगे? जैसे धीर ने कहा, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर, हमने ये टर्म क्रॉसओवर हम यूज करते रहे हैं
for Indian films to cross over to the West. लेकिन हमने अपने खुद के country में हम इतना crossover, one state has not crossed over to the other state so far. Now it's happening. And क्या हुआ है कि in the last 10-15 years, a lot of the South films had been dubbed and they were on and they were on television relentlessly, So the North audiences got a taste of South cinema a lot on television. The stars got known, that grammar of storytelling got known, the sensibility was sort of understood. So अब जब वो films release होते हैं theatrically, you're seeing a result of 10 to 15 years of a lot of television viewing of these films that has happened. And now in the pandemic for the last 2 years, people have been experiencing it even more. So I feel it's only a matter of time before all kinds of other, regional cinema also gets the same opportunity. And hopefully Hindi films will also translate down to the South. So we'll have much more of an integrated cinematic culture in our country than we've ever had before. At last, आखिर में इंडस्ट्री के बड़े-बड़े स्टार्स, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो या बहुत सारे लोग, सबने फिल्म को सपोर्ट किया है. इवन आशुतोष तिवारी के बारे में पता चला, जिनकी फिल्म नॉमिनेट भी हुई थी, उन्होंने भी काफी कुछ अच्छा कहा है नलिन, और वो सपोर्ट भी कर रहे थे शुरुआत से. शायद आपने स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी थी उनके लिए. इन सब चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक यही कहना चाहेंगे कि हम तो बहुत खुश हैं कि ये फिल्म देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं. वी आर रियली थैंकफुल टू देम that they have, in a way, they are also supporting the decision of Film Federation of India and the jury, because we are going to represent India. So as much support as we get, we want people to believe in the film, but not just blindly. If they watch the movie and they believe in it, we are of course so super thrilled. So, someone like Ashutosh Tiwari, जिन्होंने तो 5-6 महीने फिल्म देख के दिल को बोला था टक्सीडो बनाओ, आप लोग ऑस्कार जा रहे हैं. तो तभी मैंने तो हंस के मैं भूल गया था, लेकिन he was the first one to predict, and even on the phone, so he saw something, and I think whoever is watching it, they feel like supporting. कुछ लोग तो ट्रेलर देख के ही सपोर्ट कर रहे हैं. So not only here, even in the South, we were in Chennai, so many people came out in the support in Hyderabad. So I think it feels wonderful that people can sort of believe in the film and say, okay, we are a kind of a deserving kind of candidate. We do stand a chance, and hopefully we will do our best to get it all the way. Yeah. So बहुत जल्दी से कि वो जो एक्सपीरियंस है उन्होंने अपना लगान वाला शेयर किया कि किस तरीके से वहाँ बाकी चीजें करनी होंगी, क्या कुछ होगा. हाँ, उन्होंने बताया है कि हम उनको मिलेंगे और वो काफी हमसे बताएंगे, गाइडेंस भी देंगे. बहुत जनरसली उसने ऑफर किया है कि आप जब भी बोलो हीर को भी, राइट. सो ही सेड लाइक कम, and we'll talk about it and how I can help you. Yes. Thank you so much, guys. Nalin, Dheer and Siddharth sir for joining us and giving your valuable input. और उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से आपने फिल्म हेरिटेज को सेलिब्रेट किया अपनी फिल्म में, चैलो शो में, द लास्ट फिल्म शो में, पूरी देश के अलावा दुनिया भर के जितने भी मूवी लवर्स होंगे और जिनको भी फिल्मों से प्यार होगा, वो इसको एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और आप हम लोग को प्राउड करवा रहे हो और जरूर आप अवार्ड लेके आइएगा. थैंक यू. थैंक यू.